Assalamu alaikum. Students, today our topic is buffer solution. What is buffer solution? Buffer solution is the solution which resists change in pH by adding small amount of acid and base in a solution. आज हम पढ़ेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या है. बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम एसिड डाल दें या बेस डाल दें, उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता. यू नो कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो उसकी पीएच 7 से लेस हो जाती है, और अगर हम उसमें बेस डालें तो उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाती है. लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम एसिड डालें या बेस डालें, उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता. दिस सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच. बफर सॉल्यूशन कैन बी बेसिक बफर और एसिडिक बफर. मीन्स कि आपका जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच अगर लेस देन 7 है, लाइक उसकी पीएच 5 है, तो वो उस पीएच पे मेंटेन रहेगा चाहे आप एसिड डालें या बेस डालें. उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 भी हो सकती है. मीन्स अगर उसकी पीएच 9 है तो चाहे आप एसिड डालें या बेस डालें उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा. सो द बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप, बेसिक बफर, एसिडिक बफर. Basic buffer is the solution whose pH is greater than 7. It can be 9, it can be 10, it can be 11, ठीक है, up to 14. And acidic buffer is a buffer whose pH is less than 7. Means that from 1 to 7. Can be 6, can be 5, can be 4, up to 1. Now, let us see that what is the composition of acidic buffer and basic buffer. Acidic buffer किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. देन वी सी कि बेसिक बफर का कंपोजिशन क्या है और ये कैसे एक्ट करता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द कंपोजिशन ऑफ एसिडिक बफर. एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ एसिड. इट कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस. वी विल मेक द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड with any strong base. For example, let us consider this acetic acid. This is a weak acid, CH3COOH. This is a weak acid. We make the salt of this weak acid with the strong base, sodium hydroxide. Then this salt will form. So, acidic buffer consists of this weak acid and its salt with the strong base. Means that acidic buffer consists of this acetic acid and this sodium acetate. It can be another weak acid like HF. This is also a weak acid, and this is a salt of this weak acid with the strong base like sodium hydroxide. So it consists of HF and NaF. This is the composition of acidic buffer. Acidic buffer consists of weak acid and salt of it with strong base. Now let us see how this acidic buffer work. That हम इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जिसकी पीएच लेस देन 7 है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अगर हम इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो उसकी पीएच कम क्यों नहीं होती. अगर हम इसमें बेस डालें तो उसकी पीएच ज़्यादा क्यों नहीं होती. उसकी पीएच रेजिस्ट क्यों करती है, व्हाट इज़ द रीज़न. यहाँ पे हम इसकी एक्शन की तरफ जाते हैं. एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन से पहले हम ये देखते हैं कि जब एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट की आयनाइजेशन होती है तो कौन से आयन्स हैं जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिक एसिड व्हेन आयनाइज इट प्रोड्यूस एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन. दिस एसीटेट आयन इज फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड, सो इट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड एंड दिस इज अ कंजुगेट एसिड आफ्टर लूजिंग एन आयन. दिस इज द कंजुगेट बेस आफ्टर losing the H positive ion. And when sodium acetate ion is ionized, it produces acetate ion and sodium ion. So, acidic buffer solution consists of these ions: acetate ions, sodium ions, hydrogen ions. Due to these common ions, common ion effect is followed here. Due to these common ions, the equation will shift toward left, and the ionization of this acetic acid is suppressed. This is already a weak acid. ये ऑलरेडी वीक एसिड है, इसकी आयनाइजेशन ऑलरेडी कम होती है, और जो होती है वो आयंस दोबारा कंबाइन होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं. आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है.
अगर हो भी रही है तो वो दोबारा कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना रहे हैं, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। सो ये कॉमन आयंस की वजह से आपके पास जो रिएक्शन है वो लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करता है और इसकी जो आयनाइजेशन है वो फर्दर सप्रेस्ड हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब हम अगर इस सोल्यूशन में, जिस सोल्यूशन में ये आयंस मौजूद हैं, when we add base to this solution and when we add acid to this solution, what will happen? For base I use OH negative ion and for acid I use H positive. When we add acid to this solution, the acid will be neutralized by base. You know, acid base को neutralize करता है, base acid को neutralize करता है. जब हम acid add करेंगे, this acid is neutralized by this conjugate base. Acid neutralize this conjugate base and the following reaction takes place. H positive, when combined with conjugate base, it produces acetic acid. It produces this acetic acid. And you know here, this conjugate base is consumed in this neutralization reaction. आप देख रहे हैं बेस और एसिड कंबाइन हो रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, लेकिन यानी एसिड जो आपने ऐड किया वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, उसकी वजह से कोई पीएच में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आपकी बेस की कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज कर रही है तो फिर भी तो पीएच में चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे पीएच में चेंज नहीं आ रहा बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. दिस एसीटेट आयन विच इज यूटिलाइज्ड in neutralization reaction will be produced again from sodium acetate as well as acetic acid. Similarly, when we add base to this solution, this base is neutralized by H positive ion and the water is produced by this following reaction. And this H positive ion which is consumed during the reaction is again produced from acetic acid due to this reversible reaction. So, in this case, when we add acid or base to this solution, there is no change in the pH of the solution. Now comes toward the basic buffer. What is basic buffer? What is the composition of basic buffer and how it works? First of all, we have to know what is the composition of basic buffer. Basic buffer is the solution whose pH is greater than 7. Like it may be 9, it may be 10, and it is maintain its pH and doesn't change if we add acid or base in it. It consists of a weak base and salt of this weak base with the strong acid. We made the salt of this weak base with the strong acid. ठीक है, this salt is used. For example, NH4OH ये एक weak base है, और ये जो NH4Cl है, this is a salt which is formed when this weak base react with this strong acid. This salt will be formed. So the basic buffer consists of this weak base and salt of it with the strong acid. Now comes toward how it acts. When the solution contains these two chemicals, then why the pH of the solution is not changed? Comes toward its action. First of all, we will see the ionization of these two salts. NH4OH ionizes in this way, form NH4 positive and OH negative ion. This is a conjugate acid because it is produced from weak base. So this is a conjugate acid of weak base. And this is also the conjugate acid. And this is a conjugate base. So in this solution, in this buffer solution, these ions are present. These ions are present. This is acid and this is base. When we add base to this solution, it is neutralizes by this acid. And when we add acid to this solution, it is neutralizes by OH ion of this base. Okay? And the following reaction takes place. When we add acid to the basic buffer, it neutralizes by base and produces the water. And when we add base to the basic buffer, it produces the ammonium hydroxide and it is neutralized. But the conjugate acid and the conjugate base which is consumed during neutralization reaction is again produced due to the reversible reaction. In this way, there is no change in the pH of the solution. Now the question arises that why we not use strong acid and strong base for this buffer solution. हम यहाँ पे भी कह रहे हैं weak base और वहाँ पे भी कह रहे हैं weak acid. Then why we not use the strong acid and strong base? You know that strong acid and strong base is the acid and base which are completely ionizes into H positive ion, and strong base is the base which is completely neutralizes into the ionizes into the OH negative ion. For example, we consider HCl. It completely ionized to form H positive and Cl negative ion. This reaction is complete. This reaction takes place in single step and it cannot be reversed. It means that
acid which is produced here, if it is utilized, it cannot be formed again. And if this base is utilized, it cannot form again. So when this HCl solution ionizes, it forms H positive and Cl negative ion. When we add base to this solution, this base is neutralized by this H positive ion. And when we add acid, this H positive is neutralized by this Cl negative ion. But these ions which are consumed during the neutralization reaction cannot be reproduced because the reaction is irreversible. आप देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन इरिवर्सिबल है. ये जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन यूटिलाइज हो रहे हैं, ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकते. That is why we cannot use strong acid and strong base in this case. So you can write the reason that H positive and Cl negative ion which you neutralize in the neutralization reaction cannot be replaced, and the addition of acid and base obviously change the pH of solution. Hope you like my video. If you like it, subscribe my channel.